Good evening, everyone. So just ask students to join fast. We'll be starting our lecture in 5 minutes. I hope I am audible clearly. Just write in the chat box if I'm properly audible. Okay, thank you. Thank you, Dhruvi. Just join fast. Okay. So meanwhile, just ask all the other students also to join. How many students have joined till now? Bhargavi, could you write in the chat box how many students have joined? Okay. Okay, so today's session is about
jump, loop, and call instructions of 805. So we will see how to write jump instructions, how to use loops, and how to use call instruction. So with this, we'll start with today's lecture. Now, what is loop? Now, in case of okay, so let me start again. So repeating a sequence of instructions certain number of times is called as a loop. In a program, in a microcontroller program, you will come across a situation where certain part of the program you need to go on executing again and again, and that is called as a loop, right? So how to write a rule loop, that we will see today. Now the first instruction that we have already seen, I just repeat, the instruction that we use for writing a loop is DJNZ, that is decrement and jump if not 0. Then we write a register which is going to be used in that, and then we give a label. Now using DJNZ, we can create a loop. We already seen how to create a delay. So I'll just go through this DJNZ instruction once again. Now D stands for decrement, J stands for jump, N stands for not, and Z stands for not 0. That is 0. So the register is decremented. Any register that we are going to use. Say for example, we write this instruction DJNZ, we write R1, comma, any label that you give. Suppose I'm giving the label using up, and the value of R1. Now in the previous instruction, move R1, comma, hash, suppose 10H. If I write this instruction, now in this case, the value of R1 is 10. Now when this instruction is executed for the very first time, at that time, value of R1 will be decremented by 1, and microcontroller will check if that value of R1 has become 0 or not. And if the value of R1 is not 0, then it will jump to the label up. Now in the program, wherever you want, wherever you think appropriate, there you can give a label up, and microcontroller will jump to that label, to that line again and again till this register R1 becomes 0. So that is the instruction. So prior to start of the loop, register is loaded with a counter for the number of repetitions. Counter can be R0 to R7 of the RAM locations. Now you know that these are the registers R0 to R7 you can use for writing a counter. Okay. Now let us go ahead. Now suppose if we want to repeat an action more than 256 times. Now as you know, the value, whichever register that you are going to use, that is, you can use any register. So that value of the register, it can be from 00 to FF. That means 256 times only we can execute that loop. Now what if you want to go beyond 256? If you want to go beyond 256, we need to use something called as nested loop. Here you can see this word nested loop. Now this nested loop is used for executing the loop more than 256 times. Now this 256 times, why this 256 time restriction? Because the value of resistor can be from maximum value can be FF. So if we need to execute the loop more than FF times, then we need to use nested loop. So just remember the word nested. Okay, so this is nested loop. Now let us see how that is done in the program which is given below.
Now read this program carefully. It says write a program to load the accumulator with the value 55H and complement the accumulator 700 times. Now here you need to pay attention to certain things. You need to load the value of the accumulator with number 55 and you have to complement it 700 times. So 700 is definitely more than 256, right? So we have to use nested loop over here. Now let us see how that can be done. Now you also need to understand what do you mean by the word complement. Now see the value of the accumulator 8-bit value is 55. That means 0101, that is 50101, that is 5. So the value of accumulator is 55. Now when you complement it, 0 will become 1 and 1 will become 0. So this is a value which is complemented, 1010, right? So it is AA. So this is nothing but 55 and this is nothing but AA. And this is what exactly we have to do. We have to keep on complementing the value in the accumulator 700 times. So let us see how that is done. Now for doing so, we will need to use two loops. You can pay attention over here. The DJNZ instruction, which I'm going to use. For that DJNZ instruction, I have to use two loops. This is R3. I'm using R3 resistor, which is loaded with the value 10, and R2 resistor, which is loaded with the value 70. So you can see 70 into 10, that will be equal to 700. So that is how the value calculation of the value to be resistor to be initialized with is done. Okay, 700 times. So this loop, this arrangement, particular arrangement will execute or complement the value loaded in accumulator A 700 times. So the first instruction here, move instruction, what you are doing, you are loading accumulator with the value 55 here. Then you are initializing one of the resistors R3 with 10 and move R2 with 70. And you write CPLA. So when you write CPLA, what will happen? The value in the resistor, which is 55, will become AA. And then you're checking. Now the loop starts. Then you're checking whether this DJ R2 resistor has become 0 or not. Now how are you checking this? DJNZ R2 comma again. Again is a label. DJNZ R2. Decrement and jump if R2 value is not 0. Okay, so initially it was 70. Now it will become 69, and the number 69 is not equal to 0, so it will jump here again. Okay, so this is the loop. This is the inner loop. There are two loops here, inner loop and outer loop. So this is the inner loop, which is the execution of which is taking place here. So it will again complement A. So now A will become 55 once again. Initially it was 55, then it become AA. Once again it become 55 here, and the process controller will come to this instruction again. Now it will again decrement value of R2. Now earlier it was 69, now it will become 68. Is it 0? No, it is not 0. So what it will do? It will jump again to the label here. Okay, so again it will complement it, and it will go on doing it. Okay, and the point will come where the value of R2 will become 0, and at that time it will jump to the next instruction. So when the inner loop gets executed, I'll just show you the inner loop and outer loop with this thing. Okay, so these two instructions form inner loop. Okay, this is your inner loop. So this inner loop
is executed how many times? 70 times. Now, once it is executed 70 times, controller will come here and now it will decrement R3 by 1. What was the initial value of R3? It was 10 here. You can check. Now it is the first time that the microcontroller is decrementing value of R3. So R3 now becomes 9. Is it 0? No, 9 is not the 0, obviously. So it will jump to next. That means where it will jump? Here. You can check here. So this is the outer loop. Now it will load once again R2 with 70 and keep on executing the inner loop once again for 70 times. Okay, inner loop which is marked by red, marked by yellow. So once again the inner loop will be executed 70 times and DJNZ R3 will be executed. So R3 का वैल्यू जो पहले 9 हुआ था अब होगा 8. तो 8 हो गया. 8 0 है नहीं है. 8 नहीं 0 है तो वापस कहां पे जंप होगा? नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट पे once again R2 will be initialized to 70 and this inner loop will be executed for 70 times. So now R3 once again उसका वैल्यू 1 से और डिक्रीमेंट होगा 8 होगा. So now 8 7 6 ऐसे करते करते जब वैल्यू 0 होगा then it will come out of the loop. Then the program, this particular thing is over. So you can see the total number of times the A is going to be complemented will be definitely 700. That means inner loop is responsible for, this is the inner loop. This inner loop is responsible for repeating 70 times and then outer loop is responsible for repeating the inner loop 10 times. So 70 into 10, 700 times. So that is the maximum times your loop, the entire program is going to be executed or the accumulator is going to be complemented. So accordingly, you can see how many times maximum this can be done. You can load this value, maximum value to FF and R2 to FF. So maximum times, that would be the maximum time for which you can execute the complement the accumulator. FF के आगे नहीं जा पाओगे. यहाँ पे डेसिमल में 70 और 10 लिखा. हेक्साडेसिमल में बात कर रहा हूँ. हेक्साडेसिमल में FF से आगे नहीं जा पाओगे. तो और भी चाहिए, अगर आपको और डिले चाहिए तो आपको 3 लूप्स यूज करके 3 बार DJNZ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा. Okay, so whatever doubts that you have, I'm explaining it since it is a live program, live lecture on YouTube. Whatever doubts that you have, you can write it in a comment box and later we can go through it and solve those doubts. So I hope this is very clear how to use nested loop. So I'll move on. If you have any doubt, you can write in the comment box. Now after DJNZ, let us look at the conditional jumps. Now there are 2 types of jumps. Conditional jump, that means you check certain conditions. Conditional. And second obviously is unconditional. Now when you take a jump from one point to another point, when you branch out from one line of the code to other line of the code, you may check certain conditions, and if these conditions are fulfilled, then only you will jump to that location. That is called as conditional jump. And unconditional jump, simply you write jump instruction and you jump to that area. You don't check any status or any condition. Now let us see this instruction ZZ. Z stands for jump, Z stands for 0. This instruction is used when you are interested in the content of accumulator. That means if the content of accumulator is 0, then only the jump will be taking place.
For example, you can see, look at the code here, MOV A comma 0, A comma R0. That means R0 का content you are loading in a accumulator. Then JZ over. If this accumulator content is 0, then you jump to a line where you have given a label over. Or you write then the next condition, MOV A comma R1, JZ over. Again, that means you're checking value of R0 if it is 0 or R1 if it is 0. So you check certain condition and then you jump. Okay. Now remember this ZZ, whenever you are writing this instruction ZZ, this ZZ instruction can be used for this A register only. You cannot check the content of any other register and jump. Okay, so see, this is implicit type of instruction. Simply you check, simply you say ZZ and label. आप ZZ A नहीं लिखते हो, आप बोलते हो, आप लिखते हो ZZ label. That means A assume किया जाता है, उसको implicit type of instructions बोलते हैं. Explicitly, explicit and implicit ये दो words है, जहां पे accumulator आपको directly नहीं दिया गया है, वहां पे लिखा नहीं है instruction में, but default accumulator ही होता है ZZ instruction में, तो implicit type of instruction उसको बोल सकते हैं. It's taken for granted that you are specifying A there. Okay. Now see this problem. Now these are the small codes which you need to go through to understand certain things like this instruction very clearly. Now what you are doing here, you can check. It is move A comma R5. That means R5 register में जो भी value है आप A में transfer कर रहे हो. This is source, R5 the source, A is the destination, and your writing instruction, check this instruction is not ZZ, it is JNZ. This instruction is JNZ. Jump if not 0. जहाँ पे N आ गया मतलब not 0 आ गया. पहले वाले instruction में ZZ था, मतलब jump if 0, but here jump if A is not 0. Where it has to jump to the location here, to the next label by next. Okay, JNZ. Now it is checking if R5 का value 0 है क्या. अगर 0 है तो उसको उसके अंदर 55 लोड करना है. R5 के अंदर अगर 0 है तो 55 लोड करना है. तो यहाँ पे कैसे ब्रांचिंग किया है, देखो JNZ इंस्ट्रक्शन यूज किया. मतलब अगर 0 नहीं है तो दूसरा कुछ करो, लेकिन जैसे ही 0 हो गया आप यहाँ पे मूव करना और R5 के अंदर 55 लोड करना. You have to understand how ZZ and JNZ instruction works. Once again, I'll explain it for you. JNZ, ये प्रोग्राम क्या कहता है, determine मतलब find out if R5 contains the value 0. R5 का वैल्यू 0 है क्या. If so, मतलब अगर है तो उसके अंदर 55H वैल्यू लोड करो. तो हमने R5 कंटेंट जानने के लिए पहले उसको एक्यूमुलेटर में लिया. क्यों एक्यूमुलेटर में लिया, क्योंकि JNZ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्यूमुलेटर के साथ ही काम करता है, इसके लिए हमने एक्यूमुलेटर में लिया. और फिर लिखा JNZ नेक्स्ट, मतलब अगर वो वैल्यू 0 नहीं है तो कहीं और जंप करो, लेकिन जैसे ही वो 0 होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना जो है R5 #55, मतलब 55 का वैल्यू R5 में डाल दो. तो आपको थोड़ा सोच के लॉजिक बनाना पड़ेगा, मैं कब JZ इंस्ट्रक्शन यूज करूं और कब JNZ इंस्ट्रक्शन यूज करूं. तो मैक्सिमम टाइम आपको प्रोग्राम में JNZ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली यूज किया हुआ दिखेगा. ठीक है. ओके, सो मूविंग अहेड, वंस अगेन आई रिपीट, आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. I cannot till now I haven't seen any doubt there in the chat box. ठीक है, that's why I'm going ahead. Now JNC, this instruction
JNZ देखा था हमने, अब JNC लेबल, jump if no carry, JNC, jump if no carry, that means no carry, carry is 0. So whenever carry is 0, it will jump. Okay. Now if carry is 0, the CPU start to fetch and execute instruction from the address of the label. Okay. And if carry is 1, then it will not jump but will execute the next instruction below JNC. Now this particular instruction, carry is not 0 and carry is 0. This particular instruction is used mainly in addition. And see how we have to check whenever you are adding. Now this, see the example here. These three numbers we need to add. Now when we need to add these 3 numbers, whenever the addition of first 2 number is done, then we also have to check whether the carry is generated or not. And then the addition, the third addition has to be done. So put the sum in the registers R0 lower byte and R5 higher byte, because the addition of 3 numbers can be greater than 8 bits, right? In decimal also, we can see अगर decimal में addition करनी है, suppose 82 plus 34. This is a decimal addition I'm doing. 4 plus 2 is 6 and 8 plus 3, 3, right? So answer is greater than 2 digits. So third digit comes. It is 116 is the answer. So this type of possibility is also there in case of microcontroller. If you are adding 2 8-bit numbers, the answer can be greater than 8-bit, and that is what we say carry is generated. That is when the carry is generated. So you have to use 2 bytes. R0 लोअर बाइट स्टोर करने के लिए 2 रजिस्टर्स आपको यूज करने पड़ेंगे, और R5 for storing higher byte. So let us see the program how it is written. Okay. So first instruction is move a comma #0. जब भी कोई आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू मेक दिस ए 0. ठीक है, मतलब क्लियर करके लिया आपने एक्यूमुलेटर, क्योंकि आंसर आपका एक्यूमुलेटर में जाना है, तो पहले कोई भी वैल्यू अगर एक्यूमुलेटर में रहेगा तो हमको वो पहले 0 करके लेना है. तो एक्यूमुलेटर 0 करके लिया. फिर मूव R5, A0, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो क्योंकि R5 हम लोग यूज करने वाले हैं हायर बाइट स्टोर करने के लिए, तो वो भी 0 करके ले लिया. ठीक है, फिर हम लोग ने पहला नंबर जो है 79 वो ऐड कर लिया एक्यूमुलेटर में. तो एक्यूमुलेटर में क्या गया 79. फिर इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है, ये हो गया JNC N_1. This is N_1. This is a label, and N_1 is a label. Jump if no carry is there. If the carry is not there, jump to this address. And this address, what it will do? A का content जो आपने on this line you have written add instruction, second addition. A में जो भी वैल्यू है आपका, उसमें आप 05 5F5 ऐड करना. ओके, नाउ पहले आपने क्या किया, A में 79 डाला और उस 79 में F5 ऐड किया, and then you have written JNC N_2. That means
jump if carry is not generated here. तो कैरी अगर आपका जनरेट नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट एडिशन कर रहे हो डायरेक्टली। देखो यहाँ पे भी आपने चेक किया कैरी जनरेट हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नेक्स्ट एडिशन पे जाओ। यहाँ पे आपने चेक किया कैरी जनरेट हुआ क्या, नहीं किया, नहीं हुआ तो आपने नेक्स्ट एडिशन किया, दैट मींस सेकंड नंबर लिया, थर्ड नंबर लिया। ओके, अब आपने चेक किया कैरी जनरेट हुआ है क्या, नहीं हुआ तो आपने ओवर पे जंप मारा और डायरेक्टली R0 में आंसर लिया। R0 क्या था, लोअर बाइट। ये एक कंडीशन होगी। मतलब मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया उस एक्सप्लेनेशन में मैंने ये अज्यूम किया कि कैरी जनरेट नहीं हुआ है, दैट मींस 79 पहले आपने एक्यूमुलेटर में ले लिया, फिर उसमें F5 ऐड कर दिया, जो भी आप आंसर आता है। सपोज कैरी जनरेट नहीं हुआ तो आपने उसमें एडिशन, जो भी एक्यूमुलेटर में एडिशन हो गया उसमें तीसरा नंबर ऐड कर लिया E2, और जो एक्यूमुलेटर में आंसर आता है वो आपने R0 में ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज। ओके, बट अगर कैरी जनरेट होता है, यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पे इस लेवल पे अगर कैरी जनरेट होता है तो वो जंप नहीं मारेगा प्रोग्राम। वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट R5 करेगा। R5 करेगा मतलब R5 में क्या करना है, कैरी हायर बाइट स्टोर करना है, तो वो इंक्रीमेंट R5 करेगा। R5 जो 0 था वो 1 हो जाएगा, वापस एडिशन करेगा सेकंड। अब मैं सेकंड कंडीशन बता रहा हूं आपको। मान के चलो ये हर बार कैरी जनरेट हो रही है तो क्या होगा, देखो JNC होगा, JNC चेक करेगा, यस कैरी जनरेट हुआ तो R5 में वो एक ऐड करेगा, सो दिस R5 विल बिकम 1। यहाँ पे फिर सेकंड नंबर ऐड करेगा, पर फिर से चेक करेगा, यहाँ पे अगर कैरी जनरेट हुआ है तो R5 will be incremented, so R5 will become 2, obviously it will be in a hex। अगर तीसरी चार भी जनरेट हुआ यहाँ पे कैरी तो R5 will be once again incremented to 3, और फिर एक्शन कंप्लीट हो गया तो R5 का फाइनल वैल्यू रहेगा 03 और R0 का जो आपका एडिशन आएगा वो वैल्यू रहेगा यहाँ पे। तो दिस इज हाउ JNC instruction is used। Remember, थोड़ा आपको टाइम लगेगा लॉजिक सीखने के लिए। You try to draw a flow chart। Now you all of you have learned how to draw a flow chart। So जब JNC instruction आप लिखते हो तो you are taking a decision, है ना। तो JNC instruction जब आप लिखते हो तो आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। I'll take it is not visible, I'll take a white color here। So JNC instruction आपने ले लिया। Now if it is not, carry is not generated, then you are jumping to say addition, to you are jumping next addition। So I can write here next addition, that is if carry is not generated। Okay, and if carry is generated, then what you are doing, you are incrementing R5, right? Yeah, R5 आप increment करते जा रहे हो। If carry is generated, okay, then R5 आप increment करते जा रहे हो। तो ये डिसीजन है। Okay, if carry is not generated, मतलब इधर आप ट्रू कंडीशन लिख सकते हो, that means this is true। If carry is not generated, you do the addition, next number लो, addition ले लो। और if carry is generated, that means false ले सकते हो या no ले सकते हो। Okay, so R5 is incremented।
So just understand, try to understand the logic behind it. This is how any uh, any loop or conditional instruction will work. So it just take some time, but if you keep on practicing, then it will be easier for you. Okay, I hope this JNC instruction you have understood clearly. Now, likewise, there are few more instructions. DJNZ we have seen. Now, CJNE, this is also a conditional instruction. CJNE here. Oh, okay. CJNE. Compare and jump if not equal. CJNE. Conditional jump instruction है. Compare and jump. E for compare, J for jump, N for not, E for equal. Compare and jump if not equal. Now आप इक्वालिटी चेक कर रहे हो. किस दो चीजों के बीच में आप चेक कर रहे हो? Content of accumulator and the byte which you are going to write there. If these two things are not equal, this is a not equal sign, then it will jump to the location. CJNE register hash data. Now again, CJNZ register if the byte that is not equal to data, register content. If not equal to data, then jump. JC, अभी हमने देखा कैरी अगर 1 है, कैरी सेट तो जंप करो. JNC कैरी 0 है तो जंप करना. JB जंप इफ बिट इज 1. तो ये सारे इंस्ट्रक्शन JC है, JNC है, JB है, एक बिट को चेक कर रहे हैं. JB jump if bit is 1. JNB jump if bit is not 1 मतलब 0. JBC jump if bit is 1 and clear that bit. This is the most confusing as far as the exam is concerned. This instruction, particular instruction, confuses a lot student को. तो कुछ भी लिख देते हैं, jump a bit on carry or something like that. So jump if bit is 1 and clear that bit. इसमें कहीं पे भी C doesn't stand for carry, remember. कोई भी bit जो आप आगे मेंशन करोगे उसमें JBC को जो भी रेफर करोगे, अगर वो bit 1 है तो जंप करो और जंप करते समय उसको क्लियर करके जंप करो. तो ये इंपॉर्टेंट है JBC में. तो दिस इज माय फेवरेट instructions as far as exam is concerned, right? Question in the exam is concerned. Okay. Now remember this: all conditional jumps are short jumps. Now, what is short jump? There are two types of jumps: short jumps and long jumps. Okay. Literally, there's something called as long jump as well in case of 805. Now, what is short jump? Now, what happens during the jump instruction? अगर आपका ये प्रोग्राम है, सपोज ये प्रोग्राम की लाइन है, ठीक है, ये मेमोरी में आपने प्रोग्राम लिखा है. तो सपोज अगर प्रोग्राम में यहाँ पे आपने जंप इंस्ट्रक्शन लिखा, तो जंप आप लेबल मेंशन करते हो, राइट? जंप और कुछ तो लेबल मेंशन करते हो. तो आपको डायरेक्टली जंप करना है ये इंस्ट्रक्शन. लीविंग ये आपके बीच में जितने इंस्ट्रक्शन है वो आप छोड़ देते हो और डायरेक्टली जंप कर देते हो इस इंस्ट्रक्शन पे. ठीक है, जंप में. नाउ शॉर्ट जंप और लॉन्ग जंप ये क्या कैसे डिसाइड होता है? अगर जिस लोकेशन में, मतलब टारगेट एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो लोकेशन जो टारगेट एड्रेस है वो ये रेंज में है. ये रेंज में मतलब कौन से रेंज में? -128
टू प्लस 127 बाइट्स। कहां से? पीसी के कंटेंट पे। व्हाट इज पीसी? प्रोग्राम काउंटर। व्हाट इज द जॉब ऑफ द प्रोग्राम काउंटर? टू पॉइंट टू अ लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हैज टू बी फेच्ड, राइट? तो अभी एग्जीक्यूशन हो रहा था, यहां पे आप देखो एग्जीक्यूशन हो रहा था और आपने जंप इंस्ट्रक्शन लिखा, तो प्रोग्राम काउंटर will be showing the address of the next instruction that is here, और फिर आपने जंप कुछ तो एक वैल्यू लिखा वहां पे, तो ये वैल्यू जो रहेगा, जंप जो रहेगा वो -128, मतलब एक तो ये आगे हो गया, ये आगे हो गया, और पीछे वाला जंप मतलब ऐसे जंप, ठीक है? तो -128 लोकेशन बैकवर्ड एंड प्लस और 127 लोकेशंस अहेड। तो इतना लोकेशन में मतलब आप 255, मैक्सिमम वैल्यू इज 255, राइट? सो 255 बाइट तक ही वो जंप कर सकता है, आगे या पीछे। पीछे पूरा 255 नहीं, आगे पूरा 255 नहीं। तो जंप करने का जो रेंज है वो -128, मतलब पीछे 128 और आगे 127, इतना जंप कर सकता है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट जंप। और एल जंप में यू कैन सी एल जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये 3 बाइट है। और जो जंप का रेंज है दैट इज फ्रॉम 0000 टू FFFF, दैट मीन्स पूरा 64 KB का मेमोरी आप जंप कर सकते हो कहीं पे भी। तो पहले वाला लास्ट में मैंने एग्जांपल दिया था कि 255 लोकेशन तक आप जंप कर सकते हो, आगे या पीछे 128 प्लस 127। लेकिन लॉन्ग जंप में आप कहीं पे भी जंप कर सकते हो, पूरा मेमोरी लोकेशन में जंप कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई इट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, मतलब पहला बाइट तो ऑपकोड का रहेगा, बिकॉज यू विल राइट एल जंप। एल जंप के लिए कुछ एक ऑपकोड लगता है, ऑपकोड और ऑपरेंड मैंने बोला था, सिखाया था आपको। तो यू नीड सर्टेन ऑपकोड फॉर एल जंप, तो वो कोड एक मेमोरी में, एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। एंड देन you have to give an address where you need to jump, right? So second and third byte represents 16-bit target address. तो 16-bit है, तभी तो आप 64 KB कहीं पे भी जंप मार रहे हो। तो एल जंप इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का होता है, वाइल एस जंप की ओर देखो, शॉर्ट जंप, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। ओके, सिर्फ 2 बाइट। 2 बाइट क्यों? फर्स्ट बाइट तो ऑपकोड उसको लगेगा ही, यहाँ पे फर्स्ट बाइट ऑपकोड का लगेगा ही, और सेकेंड बाइट जो है वो अपने को सिर्फ 002 FF ही जाना पड़ता है। 002 FF मतलब टोटल 255, 00 अगर पकड़े तो 256। ओके, सो प्लस 127 एंड माइनस 128, इतना ही जंप मारने का। तो ये एड्रेस 8 बिट में स्टोर हो सकता है। तो ऑपकोड का 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, और जो एड्रेस है उसके 8 बिट्स लगेंगे मेमोरी में, तो वो है 1 बाइट। तो दोनों का मिला के हो गया 2 बाइट। लेकिन यहां पे आपको क्या होगा, ऑपकोड का एक ऑपकोड विल टेक 1 बाइट, और जो एड्रेस है वो 2 बाइट का होगा। तो टोटल मिला के होता है आपका 3 बाइट्स। ओके, अंडरस्टूड? एल जंप और एस जंप, ये डिफरेंस आपको पूछा जाता है एग्जाम में, और कंपैरिजन पूछते हैं आपको कि एल जंप और एस जंप में क्या फर्क है। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ अगर आपने एस जंप में टारगेट एड्रेस -128 2 + 127 से ज्यादा है, तो असेंबलर विल जनरेट एन एरर। ओके, असेंबलर को एरर जनरेट करेगा अगर आपने एस जंप यूज किया और एड्रेस जो है वो
तीन मतलब 3 बाइट का वाला 2 बाइट का एड्रेस दिया तो assembler will generate an error. Okay. Now we will move on to the call instruction. तो हमने देखा कि कंडीशनल जंप होते हैं, अनकंडीशनल जंप होते हैं, DJNZ इंस्ट्रक्शन देखा, जंप के इंस्ट्रक्शन अलग अलग कंडीशनल जंप देखे, दैट मीन्स जंप इफ 0 देखा, जंप इफ कैरी बिट सेट देखा, फिर जंप इफ बिट सेट एंड क्लियर करने के लिए इंस्ट्रक्शन देखा. अब वी विल मूव ऑन टू द कॉल इंस्ट्रक्शन. ओके, नाउ इसमें भी दो टाइप है, ACALL and LCALL. Similar to what we have seen just now, jump instruction के जो दो टाइप्स है, उसके जैसे ही यहाँ पे ACALL और LCALL है. Now before going to the instruction, let us see what for exactly this call instruction is used. And for that, you need to know what is subroutine. Are you all there? I hope you all are listening. So just type in the chat box word subroutine. Let me check if you're still there or not. In the chat box, you write the word subroutine. The slight delay in what I'm teaching, and when you write on in the comment box. When I'm saying chat box, it is a comment box in YouTube. So when you write, I'll understand that you are still there attending lecture carefully. So please write the word subroutine in comment box. Only Aarti Gupta has written till now. Others, please respond. Please respond. Please respond fast. Those who are not responding, I'll consider that they are not attending lecture. Yeah, now I have started getting the responses. Five responses only. Others, please write the word subroutine in the comment box. Consider this as your attendance at the middle of the lecture. Subroutine. Yes, Bhargavi. I haven't seen you writing. Subroutine. Okay, I'll just move ahead. Now, what is subroutine? This you're going to need again and again. Now, subroutine, what for they are used? They are used to perform tasks that need to be performed frequently. Remember this. Subroutines are used to perform repetitive tasks. What is the advantage of writing subroutine? The advantage is you save memory space. That is the advantage of using subroutine. Now, for example, while writing the program, you may have to do addition again and again. Suppose you are writing a sum program, and or forget about this addition program. I just give the example of delay. We have studied how to generate a delay, write a delay for, or like the example which I gave you, the LED one, there is a LED connected to the 8051, like this, right? And this LED needs to be turned on for certain time and turned off for certain time.
Now you have already written a program for that. So what you did there, you have used the instruction set B P1.5, say for example, this LED is connected to P1.5, and then you have written delay program here, and then you have written CLR P1.5 to clear the LED, to turn the LED off, and then you have written delay program once again here, and then you are jumping back to SETB. So this you go on carrying out again and again. This is how you have written this program. Now suppose I asked you to turn this LED on for 10 times, on and off for 10 times. What you will do? You will repeat these steps 10 times, right? Now there are different ways of doing so. You will go on writing this again and again like this. Say set B 1.5, again delay here. Then you write clear 1.5, then delay here. Then once again you write set B 1.5, then delay, and you will go on doing this for 10 times. See how lengthy the program would be. Now in this program, what you are doing, you are again and again calling, you are again and again executing this delay program. है ना? आप बार बार डिले प्रोग्राम, सेम डिले, सेम टाइम का डिले है, लेकिन बार बार आप वो डिले प्रोग्राम यूज कर रहे हो, है ना? तो ये रिपीटेटिव एक्शन है, इसको बोलते हैं रिपीटेटिव एक्शन. तो ये करने से अच्छा है आप एक काम करो, ये डिले प्रोग्राम जो है वो एक सेपरेट प्रोग्राम करके लिख के रखो. ओके, डिले प्रोग्राम है वो एक सेपरेट प्रोग्राम करके लिख के रखो, और बार बार अपने प्रोग्राम में वो कॉल करो. दैट इज वेयर दिस कॉल इंस्ट्रक्शन कम्स इन पिक्चर. एंड वो जो डिले प्रोग्राम रहेगा, मतलब डिले में आप क्या करते थे, DJNZ यूज करते थे ना, तो वैसे के वैसे प्रोग्राम आप DJNZ यूज करके लिखो और उसको एक लेबल दे दो डिले. ऐसे आपने डिले लिखा, रजिस्टर लोड किया, उसको DJNZ किया, ओके, तो ये सर्टेन टाइम आपने कैलकुलेट किया और उसके लिए डिले प्रोग्राम लिखा. अब आपने पहला सेंटेंस लिखा प्रोग्राम का, सेट बी 1.5, एलईडी आपका ऑन हो गया. अब आप ये इंस्ट्रक्शन यूज करो, से फॉर एग्जांपल LCALL, आप ACALL भी यूज कर सकते हो, LCALL डिले, ठीक है. और फिर आप लिखो CLR B क्लियर 1.5, अगेन आप लिखो LCALL डिले, और फिर ये जो है ये रिपीट करते रहो. या 10 बार लिखना है आपको तो 10 बार आप LCALL डिले लिख के प्रोग्राम उसको छोटा बना सकते हैं और डिले का सबरूटीन यहाँ पे लिखते हैं. तो ये जो पार्ट है, ये जो आपने लिखा, उसको बोलते हैं सबरूटीन. So this part is called as subroutine, and this is your main program. So this program is your main program, and this part is called as subroutine. So what you are doing, you are calling this subroutine again and again by using this LCALL and ACALL. ACALL is long call, LCALL is long call, and ACALL is absolute call. Now let us understand what is the difference between the two. LCALL is a 3-byte instruction. As in case of jump instruction, there was long jump, here it is long call. Now 3-byte instruction, the first byte is obviously your opcode, and second and third byte is your target
subroutine, where the address of the subroutine. So delay this particular subroutine, you can write anywhere within this 64K address space. Your entire memory is of 64 KB, right? So this 64 KB memory में कहीं पे भी आप ये subroutine लिख सकते हैं. That is the beauty. Like then you can use long, but absolute call जब आप use करते हो, तो यहाँ पे देखो जो आपका सबरूटीन रहेगा ये 2K बाइट के रेंज में ही होना चाहिए. ओके, तो बिकॉज एब्सोल्यूट कॉल ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, आपको ऑपकोड के लिए स्पेस दिया होता है और 11 बिट्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग एड्रेस. अगर आपका एड्रेस 11 बिट का रहेगा तो 2⁻11 मतलब 2K बाइट का रेंज होता है. दैट इज द डिफरेंस. यहाँ पे आपका ये जो डिले सबरूटीन है वो 64 KB में कहीं पे भी हो सकता है, और आपका इन केस ऑफ ACALL आपका डिले सबरूटीन ये 2K बाइट के रेंज में होना चाहिए. नाउ व्हाई डू वी यूज LCALL एंड ACALL? आपका 1 बाइट स्पेस बचता है. अगर आपने ACALL यूज किया तो आपका 1 बाइट का प्रोग्राम रोम का जो मेमोरी है 1 बाइट, बिकॉज इट टेक्स 2 बाइट, दिस टेक्स 3 बाइट्स ना, तो आपको 1 बाइट का मेमोरी स्पेस बचता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर in embedded system memory is utmost important. As an embedded programmer, as a programmer, you should try to use as less memory as possible. See, computers में क्या होता है, आप कोड लिखते हो ना, कितना भी मेमोरी हो सकता है उसका, कितना भी बड़ा कोड हो सकता है, क्योंकि मेमोरी यू हैव इनफ मेमोरी. बट एम्बेडेड सिस्टम्स में जो छोटे डिवाइसेस है जिसमें आप ये इंस्टॉल करने वाले आपका प्रोग्राम, उसमें मेमोरी लिमिटेड होती है, लिमिटेड मेमोरी में वो चलता है. तो लिमिटेड मेमोरी के लिए जो भी एम्बेडेड प्रोग्रामर है उसको बहुत सोच समझ के एवरी इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड. सो एवरी बाइट ऑफ मेमोरी इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एम्बेडेड programmer. So Harsh is asking, what do you mean by subroutine? I just now explained, Harsh, that subroutine is that small program like a delay program example I have given, which you need to keep on executing again and again. Okay, that is called a subroutine. Now let us go a little further. What happens when the subroutine is called? When you are using call instruction, the control of the program is transferred to subroutine, right? मतलब आप मेन प्रोग्राम छोड़ के सबरूटीन पे जंप मार देते हैं. लेकिन जैसे ही सबरूटीन खत्म होता है, मतलब आपका डिले प्रोग्राम जो आपने डिले कॉल किया, डिले खत्म हो गया, तो प्रोसेसर कहाँ आएगा? वंस अगेन आपके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ. देखो ये आपकी मेमोरी है, इसमें आपने प्रोग्राम लिखा है, और सपोज ये इंस्ट्रक्शन पे आपको आपने कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया. यहाँ पे मे बी ACALL और LCALL. कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद आपने ऑब्वियसली आपको एड्रेस देना है जहां पे आपका डिले सबरूटीन लिखा हुआ है. नाउ सपोज आपने डिले सबरूटीन यहाँ पे कहीं पे तो डिले सबरूटीन लिखा है, जो ग्रीन में दिखा रहा हूँ वो आपका मेन प्रोग्राम है. देखो ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम के बीच में आपने डिले कॉल इंस्ट्रक्शन लिखी, और ये जो डिले प्रोग्राम है ये आपने यहाँ पे लिखा है. ये डिले प्रोग्राम है यहाँ पे. अब मैं बोल सकता हूँ उसको डिले सबरूटीन है. ओके, आई कैन राइट डिले सबरूटीन. तो आपने कॉल किया डिले सबरूटीन को, तो प्रोग्राम ने डायरेक्टली ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्किप किए, एंड इट प्रोग्राम डायरेक्टली जंप हियर. प्रोसेसर डायरेक्टली जंप टू द डिले सबरूटीन. अब ये सबरूटीन एग्जीक्यूट हुआ. सबरूटीन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेसर वेयर शुड इट गो बैक to the next instruction to be executed, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉल इंस्ट्रक्शन लिखा था, कॉल सबरूटीन लिखा था, कॉल इंस्ट्रक्शन लिखा था, जंप किया, बीच में ये सारे इंस्ट्रक्शन रह गए ना एग्जीक्यूट होने के. तो जब
डिले सबरूटीन एग्जीक्यूट हो गया तो वापस उसको जंप करना है। कहाँ पे जंप करना है? वापस उसको जंप करना है टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये वाला इंस्ट्रक्शन जहां पे उसको उसने छोड़ दिया था वहां पे उसको जंप करना है और फिर बाकी का प्रोग्राम जो बचा हुआ था वो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वापस आने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, जहां से उसने जंप किया था, जहां पे आपने कॉल इंस्ट्रक्शन लिखा था उसके आगे का जो एड्रेस है वो एड्रेस पे उसको वापस आना है। तो मतलब वो एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? ये एड्रेस स्टोर होता है स्टैक में। हमने स्टैक मेमोरी, नाउ ये जो है स्टैक मेमोरी, ये इसके बारे में देखा था। व्हाट इज स्टैक मेमोरी? इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, right? It is a memory part of the memory RAM which is used for temporary storage. Now यहाँ पे भी temporary storage करके वो यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जहां पे उसको वापस आना है प्रोसेसर को, वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए स्टैक यूज हो रही है। लेकिन वो यूजर को, मतलब प्रोग्रामर को नहीं करना है, वो कंप्यूटर अपने आप करता है। मतलब जैसे ही आपने कॉल इंस्ट्रक्शन लिखा उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर अपने आप स्टोर कर लेता है स्टैक पे और फिर जंप लेता है सब रूटीन पे। ठीक है, नाउ सब रूटीन उसने एग्जीक्यूट किया, अब आपकी बारी आती है। सब रूटीन एग्जीक्यूशन हो गया उसका, ये पूरा का पूरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन सब रूटीन के आखिर में आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, रिटर्न, RET, रिटर्न। सो दिस रिटर्न इंस्ट्रक्शन जब आप लिखते हो तो क्या होता है, जब वो एग्जीक्यूट होता है तो ये जो स्टैक में मेमोरी स्टोर हुआ है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो स्टोर हुआ है वो वापस ले लेता है माइक्रो कंट्रोलर। प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है, पीसी इज बिकॉज पीसी, मैंने आपको जैसे पढ़ाया था ना कि पीसी हमेशा बताता है माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम काउंटर की कहाँ जंप करनी है, तो हमेशा पीसी अपडेट होते रहता है। तो जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो प्रोग्राम काउंटर इज लाइक स्टैक मेमोरी से वो एड्रेस निकाल लेता है कंप्यूटर और वो डालता है पीसी में और फिर आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। So in an exam, we always ask, explain the execution of call instruction. तो आपको तो पहले बताना पड़ेगा LCALL और ACALL, absolute call obviously आगे है। LCALL का एग्जांपल मैंने दिया था जहाँ पे 64 KB स्पेस रहता है, आपको कहीं पे भी आप सबरूटीन लिख सकते हो। फिर ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है LCALL, और जो नेक्स्ट 2 बाइट्स होते हैं वो एड्रेस होता है। And when call instruction is executed at that time, address of the next instruction is pushed to the stack memory, then it jumps to the subroutine, subroutine खत्म होता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखते हो। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो वो वापस पॉप कर लेता है स्टैक में से एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है और वापस उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यू रिमेंबर दिस, ड्रॉ दिस in your notebook. You can draw a flow chart for this, how exactly what are the steps that take place, and then accordingly you will be able to understand. So next program आप next slide पे जो program है वो आप देखो कि कैसे कैसे execution हो रहा है, you will be able to understand it properly. Okay, so this everything explain how exactly the subroutines are executed. Okay, now I'll move on to the ACALL. So ACALL जैसे हमने शॉर्ट जंप देखा था, सिमिलर हियर 2K बाइट रेंज में ACALL चलता है, और आप LCALL की जगह पे ACALL तब यूज करते हो जब आपको ROM स्पेस सेव करना होता है। So that is about LCALL and ACALL instructions. So all of you go through the programs given in the slides, the PowerPoint presentation which has been shared to you.
Now you can look at the program. Let's see here. This is the program which I was talking about. आप delay कैसे लिखते हो और उसको कॉल कैसे करने हैं. तो आपने ये प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे आप देखो एक कॉल डिले इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है और ये एक कॉल डिले इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे डिले इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है. देखो. So whenever you want to call delay, sorry, here in this program delay is written here, time delay program. So a call delay, you are calling delay again and again. ये कॉम्प्लीमेंट ए करने का प्रोग्राम है. ए आप कॉम्प्लीमेंट करो नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है. सो दिस विल गो ऑन कॉम्प्लीमेंटिंग ए अगेन एंड अगेन, and this is how delay subroutine is written using DJNZ instruction. So this part you have already studied how to write a delay. ये हमने ऑलरेडी देखा है. और ये प्रोग्राम में आप कॉम्प्लीमेंट करते जाते हो ए का वैल्यू, बीच में सिर्फ एक कॉल डिले, ये सब रूटीन आप बार बार कॉल करते हो. तो जस्ट पे अटेंशन यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये लिखे बिना आप सब रूटीन लिखोगे तो एरर आएगा. तो यू हैव टू राइट RET, रिटर्न इंस्ट्रक्शन. फाइन. So this calculation I asked you to, last time I asked you to calculate the delay. तो आप हमेशा देखते हो कि DJNZ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो 2 मशीन साइकिल्स लेता है, RET 2 मशीन साइकिल्स लेता है और ये 1 मशीन साइकिल लेता है. तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कितना टाइम आपका ये सब रूटीन जो है वो कितना टाइम चलेगा. तो दिस इज 200 बिकॉज 200 बार वो R3 रिड्यूस होकर 200 बार होगा ना, 200, 199 एंड सो ऑन इनटू 2. ये 2 जो है दैट इज योर साइकिल्स दैट यू मशीन साइकिल्स यू रिक्वायर, प्लस 1 मतलब इसका ये पहले इंस्ट्रक्शन का और प्लस 2 मतलब लास्ट इंस्ट्रक्शन का. तो लूप में पहला वाला इंस्ट्रक्शन और लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन लूप में नहीं है. ठीक है. तो इसने इस लूप के बाहर लिखा, लेकिन ये 200 बार वाला जो एग्जीक्यूशन जो होगा DJNZ वो लूप में है, तो लूप के अंदर लिखा. और 1.085 माइक्रोसेकंड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 मशीन साइकिल. सो दिस इज द टोटल डिले दैट यू आर गोइंग टू गेट. अगर आपको कम 200 चाहिए तो यहाँ पे जो वैल्यू है दैट यू हैव टू रिड्यूस से अप्रोक्सीमेटली. अगर 200 चाहिए तो 190 वगैरह, 200 की जगह पे 190 वगैरह रहेगा. ठीक है. थैंक यू वैष्णवी. Now we will move on little further. Now with this jump and call instructions, loop instructions, we will move to IO programming, input output programming, IO port programming. You have already been doing it, so I'll just brush up the things which you are doing. Okay. So as you know that 8051 has got four ports: P0, P1, P2, and P3. Each of 8 pins. Okay. Now, when you start 8051, power on reset signal is given, and all the ports are configured as input ports. That means they are ready to get the data in. Now, when first 0 is returned to a port, it becomes output port, and to reconfigure it to the input, 1 must be sent to the port. Okay. So it is a practice whenever you are going to write a program, and in that program, whenever you are going to use any port as an input port, always write 1. Always write 1. Make it 1, and then you go ahead. So this is how you start a program, or how you start programming of the port. Now this also we have seen. Now P0, out of all these ports, that means all the ports P1, P2 and P3, they have got internal pull-up resistance.
but only P0 port. Okay, this P0 port is not having this internal pull-up register, does not have internal pull-up register. So what we do, that is, we call it as open drain connection. This also I explained you last time. So look at this. This is open drain. Now drain, from where does this drain word come from? MOSFET. So any port के आउटपुट में एक MOSFET होता है, ये MOSFET का सिंबल है, और ये ड्रेन है, ओके, ये सोर्स है. सो ये ड्रेन जो है कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन ड्रेन. सो if you want to use this port for IO operation, then you will have to connect this port externally through these resistors. These resistors are called as pull-up resistors, external pull-up resistors. Okay, 10K का resistor लगा देते हैं, then you can use this port. That is the hardware part of it. This is how you have to use it for your hardware. See this, we have seen port 0 अगर आपको input port करना है तो क्या करना है? Write 1 to all 8 bits. For example, here you can say move a comma #0 ff, and then you take a content of a to port 0. So first of all, you have to make the port. That means here you can see आपने यहाँ पे क्या किया, ff a में लिया और a का वैल्यू जो ff है वो p0 में लिखा. तो p0 आपने 1111 करके लिखा, मतलब इनपुट पोर्ट करके कॉन्फ़िगर किया. अब आप वो इनपुट करके यूज कर सकते हो. सो दैट इज हाउ वी डू इट. ओके, now we have also seen that see दो पोर्ट है आपके, एक है P0 और दूसरा है P. Now these two ports have got alternate functions. Now P0 का alternate function है AD0 to AD7. मतलब this port acts for as an address line and data line. Address मतलब आप देख रहे हो A0 to A7, तो लोअर बाइट एड्रेस इस पोर्ट पे आता है, और डेटा तो D0 to D7, ये 8 बिट डेटा, मतलब दिस पोर्ट इज यूज्ड एज अ डेटा एज वेल एज फॉर एड्रेस. और P2 पोर्ट जो है वो हायर बाइट, मतलब A8 to A15, ये एड्रेस P2 पोर्ट पे आएगा. दैट वी हैव सीन एज वेल. Now पोर्ट 3 P0 हमने देखा, जो P0 था पोर्ट 0 था. देन पोर्ट 2, ये दो है अल्टरनेट फंक्शंस, एड्रेस और डेटा. ऑब्वियसली P0 सिर्फ डेटा और ये एड्रेस के लिए, जैसे मैंने बोला. P1 के लिए कोई अल्टरनेट फंक्शन नहीं है, मतलब इट इज प्योरली IO पोर्ट, राइट. एंड P3 जो है उसके हर एक पिन को अलग अलग फंक्शन है. तो यहाँ पे वो फंक्शंस हम देख रहे हैं. देखो 3.0 को और 3.1 को, ये अगर आप दो देखोगे तो RxD एंड TxD. RxD TxD सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है. आपने देखा रहेगा कि आपका 8051 का किट जो है वो आप कनेक्ट करते हो सीरियल पोर्ट को. ना आजकल के लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं आता है, तो सीरियल पोर्ट की जगह पे आप USB को कनेक्ट करते हो और फिर USB सीरियल में कन्वर्ट हो जाता है. बट उसके वो कम्युनिकेशन के लिए जो पोर्ट्स यूज होते हैं, पिन्स जो यूज होते हैं, ये दो पिन जो है माइक्रो कंट्रोलर के 8051 के, ये दो पिन कम्युनिकेट करते हैं. तो आपने UART सिलेक्ट किया रहेगा काइल में, इफ यू रिमेंबर. तो यू हैव दिस यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, UART सर्किटरी होता है 8051 के अंदर, और
वो दो पिंस बाहर आते हैं RxD TxD के फॉर्म में। RxD रिसीविंग डेटा, जो डेटा रिसीव करता है जिस पिन पे माइक्रो कंट्रोलर, और TxD मतलब वो पिन जहां पे माइक्रो कंट्रोलर डेटा भेजता है। ओके, तो मोर अबाउट दिस वी आर गोइंग टू सी इन सीरियल कम्युनिकेशन। नाउ ये दो पिन जो है पोर्ट 3 के, यहाँ पे ये दो पिन जो है पोर्ट 3 के, दीज आर इंटरप्ट्स। नाउ वी विल आल्सो सी इंटरप्ट्स। दो इंटरप्ट्स होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स के पिन है ये, INT 0 बार और INT 1 बार। So these are the two interrupts pin, external interrupts pin. There are external interrupts and internal interrupts. बाद में ये दो पिन जो है 3.4 3.5 ये टाइमर्स के लिए है। There are two timers, timer 0 and timer 1, और दो टाइमर के लिए दो पिंस दिए गए हैं। These timers also act as a counter. Okay. So using 8051 you can count pulses given by external circuitry. तो ये 8051 यहाँ पे ऐसे है, उसका ये T0 पिन है, और यहाँ पे एक सर्किटरी आपने कनेक्ट किया जो ऐसे पल्सेस दे रहा है। So you can count using writing a program, you can count this number of pulses, and for that, for connecting these pulses to 8051, these two pins are used. So remember, हम लोग ने T0 C1 नहीं लिखा उसको काउंटर करके, उसको लिखा है T0 and T1, बट इट इज यूज्ड इन अ काउंटर मोड। तो टाइमर के जो सर्किटरी है वो काउंटर करके भी काम करता है। टाइमर जब आप यूज करते हो तो इंटरनल पल्सेस आर काउंटेड, क्लॉक पल्सेस आर काउंटेड, एंड जब काउंटर रहता है तो एक्सटर्नल पल्सेस आर काउंटेड। बाद में लास्ट के दो जो पिन है उस पोर्ट के, वो पिन हम लोग यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे रीड बार एंड राइट बार करके यूज होता है। तो आप जब एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करते हो तो उसको सिग्नल देना पड़ता है ना, रीड करना है या राइट करना है। हमने मेमोरी इंटरफेसिंग देखा था, तो रैम है तो आप उसमें राइट भी करते हो, रीड भी करते हो। अगर रोम है तो सिर्फ आप रीड कर रहे हो, तो उसको अप्रोप्रिएट, मेमोरी को अप्रोप्रिएट सिग्नल देना पड़ता है कि अब मुझे रीड करना। माइक्रो कंट्रोलर रीड बार देता है तो रीड करता है, मेमोरी को पता चलता है कि माइक्रो कंट्रोलर को रीड करना है। अगर राइट बार देता है सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर, तो मेमोरी को पता चलता है कि माइक्रो कंट्रोलर राइट करने वाला है। ओके, सो दिस इज हाउ now in this part of the program you can see how you can address one bit of the port। ये ऑलरेडी हमने यूज किया बहुत बार। देखो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन, मतलब पूरे पोर्ट, पूरा का पूरा पोर्ट आप एक साथ 0 या 1 कर सकते हो। कैसे? मूव इंस्ट्रक्शन यूज करके, राइट। बट अगर एक बिट उसमें से 1 या 0 करना है तो आप ऐसे करते हो, CPL इंस्ट्रक्शन लिखते हो और SETB इंस्ट्रक्शन लिखते हो। ये दो इंस्ट्रक्शन, CPL मतलब कॉम्प्लीमेंट करना है, क्लियर भी एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखो, क्लियर भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो CPL, SETB और क्लियर भी ये इंस्ट्रक्शंस है जहां पे आप एक एक बिट पे काम कर सकते हो, कोड के एक एक सिंगल बिट पे काम कर सकते हो, ठीक है। Now let us look at this small program. Now what does this program say? This we have already seen, but the program is given in a little bit different way, so you should be able to understand what is written in a program. Okay, you all there with me? Say yes sir if you are there and attending this lecture seriously, then write yes sir. Let me check how many of you there. Thank you. Thank you. Okay, so this word over here is new to you. It may not be new, but you need to understand what exactly it is. The program says create a square wave of 50% duty cycle. The moment you say square wave, actually square wave has got 50% duty cycle. But what is duty cycle? What is duty cycle? That you have to understand. See, can anybody write what is duty cycle now?
Do you know what is duty cycle? Till I draw it over here, you can write what is duty cycle. ये है आपका स्क्वायर वेव. इसको स्क्वायर वेव कब बोलेंगे? जब ऑन टाइम, तो ये है आपका टी ऑन और ये है टी ऑफ. जब इक्वल हो, ऑन टाइम इज इक्वल टू ऑफ टाइम, देन उसको हम बोलेंगे स्क्वायर वेव. ठीक है, नहीं तो वो रेक्टेंगुलर वेव बन जाएगा दूसरा वेव, अगर वो सेम नहीं है तो. बट प्रोग्राम में जब लिखते समय आपको बोला जाएगा स्क्वायर वेव ऑफ 50% ड्यूटी साइकिल, स्क्वायर वेव ऑफ 70% ड्यूटी साइकिल, वो एक कॉमन वेव एक बन गया है. तो बोलेंगे रेक्टेंगुलर वेव ऑफ 70% ड्यूटी साइकिल. बट जैसे आप 70% ड्यूटी साइकिल करते हो वो रेक्टेंगुलर वेव बन जाएगा. एनीवेज, स्क्वायर वेव ऑफ 50% ड्यूटी साइकिल मतलब ऑन टाइम इज इक्वल टू ऑफ टाइम. व्हाट इज ड्यूटी साइकिल? ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला है टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ. ऑब्वियसली परसेंटेज में है तो इंटू 100. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ड्यूटी साइकिल. तो टी ऑन से आपका है 500 माइक्रोसेकंड. लेट मी राइट इट हियर. 500 माइक्रोसेकंड है और ऑब्वियसली टी ऑन टी ऑफ इक्वल है तो ये बनता है 100 माइक्रोसेकंड इंटू 100. तो परसेंटेज में कितना आता है? 50, है ना. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आस्क्ड. तो आपको प्रोग्राम लिखना है टू जनरेट अ स्क्वायर वेव. टू जनरेट अ स्क्वायर वेव. तो कहां पे? कोई भी पोर्ट पिन पे, बिट 0 ऑफ पोर्ट 1. मतलब यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको. ये 8051 है, ये है पोर्ट 1 का बिट 0 P 1.0 और इस 1.0 पे आपको स्क्वायर वेव जनरेट करनी है. सी ड्यूटी साइकिल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको बहुत जगह पे आपको ड्यूटी साइकिल वगैरह वर्ड मिलेगा. तो हम लोग, मैं अभी जो सिखा रहा हूं आपको, ड्यूटी साइकिल ऑफ द स्क्वायर वेव विच इज जनरेटेड इन माइक्रो कंट्रोलर. तो ठीक है, तो ये स्क्वायर वेव है, P 1.0 पे जनरेट करनी है. तो ये स्क्वायर वेव आपको कैसे, आपको अगर एक्चुअली देखना है, आपके पास जो 8051 का बोर्ड है उसके पोर्ट 1 के 0 नंबर पिन पे आपने स्क्वायर वेव जनरेट की. अगर वो स्क्वायर वेव आपको देखनी है तो आप कैसे देखोगे? कमेंट में लिखो. अगर स्क्वायर वेव आपको देखनी है 8051 के पोर्ट पे जनरेट हुई तो आप कैसे देखोगे? मुझे सिमुलेटर, आपने काइल पे सिमुलेटर यूज करके आपने स्क्वायर वेव वगैरह देखा रहेगा. यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपको, एक्चुअल हार्डवेयर जो आपके पास है उसके पोर्ट 1 के 0 नंबर पिन पे अगर स्क्वायर वेव जनरेट होती है तो आप वो कैसे देख पाओगे? कोई आंसर देगा मुझे कमेंट में? कैसे देख पाओगे? उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑसिलोस्कोप और CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. सो ये ऑसिलोस्कोप जो है वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा वो पोर्ट के 0 नंबर पिन पे, और फिर ऑसिलोस्कोप पे आपको स्क्रीन रहता है और स्क्रीन पे ये वेव आपको दिखेगी. तो ये प्रोग्राम है आपका. तो वो प्रोग्राम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग. वही प्रोग्राम है. आप पहले पिन को 1 करके लो, फिर डिले सबरूटीन कॉल करो, फिर पिन को 0 करो, फिर से सबरूटीन कॉल करो और एस जंप हियर, मतलब आप वापस जंप करो. कहां पे जंप करना है? पहले इंस्ट्रक्शन. तो प्रोग्राम तो सेम रहता है, वेरिएशंस होते हैं उसमें. अब इसमें डिले जो लिखा है, नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम प्रोग्राम आल्सो इज शोन देयर. उन्होंने क्या किया देखो, सेट भी क्लियर भी नहीं यूज करना है आपको तो CPL यूज करो.
CPL 1.0 डिले कॉल करो, SJMP हियर वापस जंप करते रहो. तो ये अलग वे, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम. So this can easily be done. See, now you can see below. CPL लिखा. CPL मतलब क्या है? 1 रहेगा तो 0 करना, 0 रहेगा तो 1 करना, और ये करते रहो थोड़े थोड़े डिले के बाद, right? So that itself your program. So compared to the program above, this program is small. So you are saving some memory. तो एम्बेडेड माइक्रोकंट्रोलर जो प्रोग्राम करता है, जितना मेमोरी कम मेमोरी यूज करके वो प्रोग्राम लिखेगा उतना वो अच्छा प्रोग्रामर माना जाएगा. A small program here. Now what we are doing in this program, we are combining two things. Conditional jump we are using. We are using this conditional jump and using clear and set instructions as well. So what is the program? Write a program to perform the following. I was asking you about oscilloscope. I asked you to name an instrument which is used to see waveform. That was my question, Ruby. Okay. So here, see the program. Look at the program. You have to write a program to perform the following. Keep monitoring bit 1.2 until it becomes high. When that bit becomes high, write a value 45H to the port 0 and send high to low pulse to pin 2.3. Understand, whenever the program is asked, you have to divide it into number of parts and ensure that you know how to perform each task. First task is keep monitoring bit 1.2 until it becomes high. Now, how you can monitor? You can monitor it by using JNB instruction. Here, see. Jump if bit is not set. ये instruction आप use कर सकते हो to monitor. Then when it becomes high मतलब JNB instruction आपने use किया. तो अगर JNB क्या है? Jump if bit is not set मतलब 0 है. तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वहीं के वहीं रहना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो JNB P1.2 again. Where is again? Here only. So this loop or this instruction will keep on executing if this bit is not 0. Not 0 मतलब क्या? 1. तो ये अपना फुलफिल हो जाता है. पहला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाता है JNB यूज करके. अपना वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है ना. If bit is not 0, remain there. Keep on executing this instruction again and again. So this is the instruction used for that. अब वो 1 हो गया, 0 हो गया. अभी पहले 1 है तो इधर ही इधर रहेगा. 0 हो गया तो वो नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा. यहाँ पे क्या करेगा? वो A का वैल्यू P0 में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि हम लोग ने क्या लिखा था कि हाई होता है तो 45 पोर्ट 0 में ऐड करो. तो ये पोर्ट 0 में A का वैल्यू हमने ट्रांसफर कर लिया. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है सेकंड वाला, ये वाला इंस्ट्रक्शन है. ओके, ये वाला. ठीक है. तो 45 P में ट्रांसफर कर लिया. 45
P0 में ट्रांसफर कर लिया। वो कहाँ से आया? क्योंकि A में हमने ये पहले वैल्यू 45 स्टोर करके रखा था, यहाँ पे ऊपर देखो, तो ये वैल्यू हमने P0 में लेके आया। ठीक है, नाउ उससे पहले 1.2 को देखो, ये इंस्ट्रक्शन देखो, SETB 1.2, this instruction why we are writing, because P1.2 as a input port यूज करना है। तो मॉनिटर करना है मतलब क्या, वो पिन को, लुक एट दिस डायग्राम विच आई एम ड्राइंग, ये 1.2 नंबर का पिन है, उस पिन को ऐसे VCC को कनेक्ट किया है, ये स्विच है यहाँ पे सपोज ऐसे, और वो VCC को कनेक्टेड है। जब तक वो VCC को कनेक्टेड है तब तक वो 1 है, मतलब ये स्विच क्लोज्ड है, सपोज तो VCC को कनेक्टेड है। अगर मैं दूसरा एक स्विच उसको ग्राउंड पे लगाऊं, यहाँ पे एक दूसरा स्विच लगाऊं जो ग्राउंड पे कनेक्टेड करेगा उसको, ओके, तो ये स्विच ओपन करके ये स्विच में क्लोज करूं तो इसको 0 मिल जाएगा। तो मतलब दोनों टाइम पे वो इनपुट ले रहा है, यहाँ से 1 या 0 इनपुट ले रहा है, तो इनपुट पिन हो गया 1.2, इनपुट पिन करके काम करता है। तो इसमें ऑलरेडी पहली बार मैंने बताया था आपको 1 लिखना है ताकि वो इनपुट बने, और लास्ट में जो है सेंड हाई टू लोकल, ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं। सेट बी मतलब 2.3 हाई कर लिया, फिर क्लियर कर लिया, तो हाई करके लो किया मतलब हाई टू लो पल्स जनरेट कर दिया। तो वेरी सिंपल प्रोग्राम, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ ईच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, वैसे ही आगे के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप देख लो, 4.6, 4.7, ओके। Then there are certain instructions, logical instructions, read, modify, write. So this all instructions, ये जो part है वो, that is the homework for you to read, study all the other slides and try to understand what these slides are explaining. ठीक है? So in the next lecture we will look at addressing modes. We have studied different instructions, but I did not mention addressing mode. So in detail we will see addressing modes as well. So that's it for today. Thank you for being there. If you, as I told you, if you have any doubt, then you can write it in the comment section. We will try to discuss this in in-person class. So most probably we will have lecture tomorrow as well. I'll let you know when that lecture be. So once again, I request all of you to write addressing modes in the comment box, and finally this will be considered as your attendance. This will tell me that you were there till the end of the lecture. Please write addressing modes. Okay, those who are absent for any unavoidable reason, ask them to go through the entire this lecture on the YouTube, and that is purposely why I have conducted this lecture on the YouTube, so that it gets directly recorded and I don't have to waste some time in again editing the things. So I hope you all are going to write addressing mode. That will be the topic of next lecture. Please write addressing mode in the comment box. I can see only Dhruvi very active there, but others are not commented. I'm waiting for you all to write the topic of next lecture. Please write topic of next lecture. Bhargavi, Gauri, Jyoti, Sakshi, Shrutika, Shruti, they have written.
topic of next lecture. Others as well, please write topic for the next lecture. And Bhargavi, could you just let me know how many are present right now? Pratima has written. Vaishnavi has written. Dhruvi, thank you. Thank you for attending the lecture. Bhargavi, could you tell me the final number of students, those are still there? $19. That means many are absent.